नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। हमारे ये बॉर्डर गावस्कर सीरीज के स्पेशल एपिसोड्स में आप सबका फिर से स्वागत है। और आज हमारे साथ अनूप मित्रा जी हैं और क्या फैंटास्टिक गेम ऑफ क्रिकेट रहा आज। ये वाकई में इस तरह के खेल जो है वो टेस्ट क्रिकेट को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। और क्या सुपर बैटिंग परफॉर्मेंस। फर्स्ट ऑफकोर्स थोड़ा सा बॉलिंग ने स्ट्रगल किया शायद मुझे ऐसा लगा कि सेकंड डे पे विकेट थोड़ा सा आसान हो गया बैटिंग करने के लिए फर्स्ट डे के कंपैरिजन में, तो उसलिए टेलेंडर्स ने थोड़ा सा खेला। पर ऑफकोर्स थोड़ा सा इंडिया की प्रॉब्लम रही है कि वो टेलेंडर्स को आउट करने में थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। बट उसके बाद जो बैटिंग परफॉर्मेंस दोनों ओपनर्स की रही, उन्होंने डे एंड होते होते ऑस्ट्रेलिया के शोल्डर्स को डाउन कर दिया। आज हमारे पास 218 रन की लीड है और स्कोर है 170 प्लस फॉर 0। अनूप, कैसे देखते हैं आप इस पूरे दिन को, पूरे आज के सेशंस को, सारे मल्टीपल सेशंस, और आज का दिन कैसा रहा आपकी नजर में? एक्चुअली अगर आप सोचोगे तो ये यू कैन से इट इज ऐतिहासिक दिन है ये एक्चुअली, बिकॉज ऐसा बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलता है कि पर्थ जैसे विकेट में आफ्टर बीइंग 150 ऑल आउट यू विल एक्चुअली एंड द सेकंड डे ऑन द टॉप, राइट? बहुत कम ऐसा सिनेरियो आता है बिकॉज पर्थ जनरली ऑस्ट्रेलिया का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। यूजुअली दे डू वेरी वेल इन पर्थ बिकॉज वो पिच इतना फास्ट होता है और उस पिच में यू नो लाइक मोस्ट टीम स्ट्रगल। इसके लिए जनरली वो ऑलवेज फर्स्ट टेस्ट मैच पर्थ में रखते हैं बिकॉज उनको भी पता होता है कि जो भी टीम आते हैं दे विल ऑलवेज स्ट्रगल इन पर्थ, व्हिच मींस दे विल गेट दैट फर्स्ट एडवांटेज ऑफ प्लेइंग वेल। बट इंडिया ने बेहतरीन खेला है, राइट, टू बी ऑनेस्ट। 150 ऑल आउट होने के बाद टू कम फ्रॉम देयर टू गेट ऑस्ट्रेलिया डाउन टू ऑलमोस्ट 70 पे 7 या 8, and morning Bumrah started with an absolute peach of a delivery to get Alex Carey, right? उसके बाद obviously you know like we had that you know tailenders playing a little bit. दो कारण, एक तो इंडिया always struggle with tailenders and not just India, काफी टीम है जो tailenders को निकालने के लिए struggle करते हैं। Gone are the days when you had the amazing West Indian fast bowlers, right, who would just walk over the tail. या तो you know वसीम अकरम या वकार यूनिस, आपको को याद होगा तो उनके जो टो क्रशिंग यॉर्कर्स होते थे वो टेलेंडर्स के लिए काफी अच्छा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बराबर, करेक्ट ना। और आजकल के वो वाले बॉलर्स नहीं है, और आजकल के टेलेंडर्स भी टेलेंडर्स नहीं बोल सकते हो आप। दे आर डिसेंट बैट्समैन, इफ दे आर नॉट गुड बैट्समैन दे आर डिसेंट बैट्समैन। एंड जैसे आपने कहा वो पिच भी थोड़ा सा सेटल हो गया था, एंड व्हिच यू कुड आल्सो सी फ्रॉम द फैक्ट दैट इंडिया वर एबल टू यू नो लाइक प्ले अ लॉट बेटर. So obviously, you know, like Mitch Stark and Josh Hazlewood managed to get them just over 100. But अगर आप देखोगे तो honestly, to get a 40-run lead after scoring 150 on a Perth wicket is absolutely wonderful, because बहुत कम टीम है जो actually ऑस्ट्रेलिया के against ऐसे pitch में they can take a 40-run lead. It would have been even 70-80-run lead had they managed to get that last wicket. But even getting Australia all out in 100 or 104, whatever that score was, is a monumental achievement. Right. So it's absolutely a wonderful bowling performance from a very young bowling squad, right? It is not a squad that has got a lot of experience. Na aapke paas Shami hai, na you don't have any of the older, you know, experienced players in the attack, barring Bumrah. From a fast bowling perspective, you don't, I mean, neither is you know like Harshit Rana or you know Siraj the number one bowlers that you have in the lineup, right? So it's a great achievement. Absolutely. और स्पेशली अगर हम लोग मैच को थोड़ा सा जो देखें तो ये पता पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो बॉलिंग करी वो शायद मिशेल स्टार्क की बॉलिंग थोड़ी अप टू द मार्क रही। उसके अलावा बाकी जो दूसरे बॉलर रहे वो थोड़े से ऑफ शेड बॉलर्स रहे, क्योंकि मिशेल स्टार्क ने जब बॉलिंग करी तो कई सारे एजेस जो हैं वो स्लिप तक गए, पर उसमें से कुछ कैरी नहीं हुए या फिर स्लिप के बीच में से निकल गए। तो वो उन्होंने एक अप टू द मार्क बॉलिंग करी, पर उनको मैच करता हुआ जो सपोर्ट दूसरे बॉलर्स की तरफ से चाहिए था वो उनको नहीं मिला। मैं भी मैच देख रहा था और आपने भी मुझे उस समय पिंग करके बताया था कि जो यशस्वी जायसवाल ने जो कवर ड्राइव खेला था दैट वाज फैंटास्टिक।
और जो केएल राहुल की बात करें तो केएल राहुल ने जो एक जो स्ट्रेट ड्राइव मारा स्टार्टिंग में, उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस शॉट खेलने का एक अलग ही था। फिर उसके बाद उन्होंने एक पुल शॉट मारा, फिर उन्होंने भी कुछ कवर ड्राइव्स खेले, और यशस्वी जायसवाल ने भी कुछ अमेजिंग शॉट्स खेले, और स्पेशली अगेंस्ट मिशेल स्टार्क एंड नेथन लायन को जो उन्होंने आगे बढ़ के कदमों का इस्तेमाल करके जो सिक्स मारा, वो बड़ा एक अमेजिंग शॉट था, क्योंकि वहां पर लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन पे एक फील्डर भी मौजूद थे। उसके बावजूद उन्होंने वो चांस लिया और उन्होंने बड़ा ही अच्छा कनेक्ट किया। हाँ, इस पूरे दौरान यशस्वी जायसवाल के करीब करीब 3 एजेस स्लिप की तरफ भी गए, पर वो या तो कैरी नहीं हुए या तो फील्डर के बीच में से निकल गए। पर हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि जो फर्स्ट इनिंग की जो लर्निंग थी, उस लर्निंग को इंडियन बैट्समैन ने काफी अच्छे से अप्लाई किया, कंसिडरिंग कि पिच भले ही बैटिंग के लिए इजी हुआ हो, पर उस इजी इंटरनेशनल लेवल पे नथिंग इज इजी, क्योंकि अगर कितना भी इजी हुआ हो, आपको एप्लीकेशन वहां पे जाके करना पड़ेगा। तो अगर आप आपकी लर्निंग से सीखेंगे नहीं और फिर उसको अप्लाई नहीं करेंगे, तो आप इस तरह के परफॉर्मेंस नहीं डिलीवर कर सकते। तो वो इंडियन बैट्समैन ने काफी अच्छे से वो चीजें करी। व्हाट डू यू थिंक? अगर आपने जो फर्स्ट पॉइंट बोला था राइट अबाउट मिचेल स्टार्क एंड द अदर बॉलर्स, अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली मिचेल स्टार्क was very very good. It's not कि बाकी सारे बॉलर were not very good, but the problem is that वो पिच काफी settle हो गया था, and Indian batsmen realized that कि वो पिच में अगर आप खड़े रह के खेल सकते हो तो you can easily make good amount of runs. तो ऑब्वियसली वो क्या हो गया कि द मोमेंट इंडियन ओपनर स्टार्टेड मेकिंग रन्स, इट विल जनरली डिफ्लेट द ऑपोजिशन बॉलिंग अटैक, राइट? बिकॉज अगर आप ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सोचोगे तो दे ऑलरेडी केम विद अ डेफिसिट ऑफ 40 रन्स, राइट? दे डिडंट प्ले वेरी वेल, राइट? तो ऑब्वियसली और वो पिच थोड़ा सा सेटल हो गया था, बिकॉज आई एम श्योर दे वुड हैव सीन दैट देमसेल्व्स, राइट? बिकॉज व्हेन इफ मिचेल स्टार्क एंड जॉश हैजलवुड कैन play like 100 plus balls, that means the pitch has definitely settled down, right? So uske wajah se I would say that Australia was very very flat on that wicket. They needed a lot more better bowling. Agar aap end mein dekhoge to I think they had the right tactic when they actually like did a lot of short pitch bowling to Rahul and to Jaiswal, right? And Jaiswal is an aggressive player, right? Or aggressive players, and he's not a compulsive hooker, right? जो the compulsive hooker होते हैं, जैसे Rahul is very good on the back foot, and so is Rohit Sharma, right? They are all players who can play the hook shot very well. Jaiswal is not one who plays the hook shot that well, right? So if you ask me, the Australians should have actually followed a bit more chin music. They should have actually attempted to bowl a lot more on Jaiswal's like bouncers and get it more towards his face to actually unsettle him a bit. I thought the Australian bowling was very very flat. जैसे ही like the Indian batsmen started to get a bit of runs and get a sort of momentum going, and they suddenly saw that the pitch was not as demonious as it was in the first day. I think the Australian team just went a little too flat. तो उसकी वजह से I think they struggled to get wickets. And obviously एक बार वो पिच में अगर आप सेटल हो गए तो आप आसानी से आराम से खेल सकते हो if you are a good batting batsman. And there is no doubt that अगर आप केएल राहुल का हम बात करें, right, he's been a good player, but he's had injury problems and he's been very inconsistent, right? उनका सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वही हुआ है कि वो काफी inconsistent है, and he's been one of those, अगर आप देखोगे ना, he's the typical worker that you get in a company, right? वो सारा काम करता है, राइट? आप उसको विकेट कीपिंग करने बोलो, विकेट कीपिंग कर लेता है वो। आप उसको बोलो कि चलो आज वन में खेलो तो वन में खेलता है। अगर आप बोलो मिडिल ऑर्डर में खेलो तो मिडिल ऑर्डर में खेल लेता है। लाइक अगर वो ऐसा इज अ टिपिकल लाइक द लॉयल वर्कर दैट यू गेट इन एनी कंपनी, राइट? जो सारा काम करते हैं, एंड उन जैसे वर्कर्स को आप कभी भी ज्यादा वैल्यू नहीं देते हो, राइट? यू ऑलवेज लुक फॉर दोस हाई लेवल ऑफ पीपल, परफॉर्मर्स हु कम एंड डू लाइक वन जॉब. But Rahul is that kind of a player who does everything as the team requires, right? So even for him to open now was a very big decision, right? Because he's not open for a while, even in domestic cricket, yeah, even in IPL. He doesn't necessarily, IPL to theek hai 20 overs hai, but test cricket mein open nahi karte hain wo, neither he opens in domestic, right? So it is a big challenge for him to come and open. So I think of the two batters, Rahul
played very well in the first innings as well. He had that unfortunate dismissal, or else he would have probably made a lot more runs. So I thought Rahul played extremely well, and then Jaiswal was a little circumspect in the start, but as the pitch started to ease out and he got used to the pace of the wicket, for his kind of batting technique, I think Australia suits more. मैंने आपको, if you remember when we first started speaking about it, मैंने कहा था कि Indian players will enjoy playing in Australia because they are now used to playing in those kind of wickets. They are not used to playing in the wickets that were offered for the India-New Zealand series. So I think this kind of wicket will suit most of the players who are actually there. आप कोई भी players ले लो Indian current team में, they'll be a lot more at home playing on this kind of pitch. And agar aap notice karoge, Rahul, though, there was about 150 balls when there was not a single four that was hit by India in the innings. Okay, that's almost 20 plus overs, right? The good Right. part was they had a lot of patience because important जब आप overseas खेलते हो is आपको वो patience की जरूरत पड़ती है. You cannot like start and play aggressively at all points of time. The good point was they were very, very focused. Both the players were like determined that they had to get the team to a good position, and like they were ready to wait it out. When Australia bowled really, really well, they were ready to wait it out. So that is a credit to both Jaiswal and Rahul. Jaiswal especially because he's a lot more younger. He hasn't played in Australia before. Rahul ke case mein at least he's got experience, but I think Jaiswal was absolutely amazing in the way he played and approached that innings. So all in all, I Right. think it was a great day for Indian cricket because of the fact that you don't get such opportunities. Very few times have foreign teams come and done well at Perth. So it's a great time for Indian cricket. एब्सोल्युटली। और अनूप, क्या क्या ऐसा भी मतलब हम इसको अगर थोड़ा सा सोचें कि जो डे स्टार्टिंग जब होता है, डे स्टार्ट जब होता है, तब जो पिच में जो मॉइस्चर होता है या तब जो पिच में थोड़ी बहुत जान होती है जो बॉलर्स के लिए हेल्प करती है, वो समय मिशेल स्टार्क और हेजलवुड ने निकाल दिया। तो उसके बाद जब इंडियन बैटिंग करने आई तो उस समय जो इनिशियल जो हेल्प जो पिच की तरफ से बॉलर्स को मिलती है, वो चीज तब तक पिच ऑफर कर चुकी थी। You can say, but actually Perth ka, if you remember, right, the first day when we were chatting about this, you said you were very surprised why India opted to bat, right? मैंने आपको बताया था कि उसका एक रीजन है कि it's generally believed Optus जो current Perth stadium है, not the old Waka, जो current Optus stadium है, वो pitch generally settle down हो जाता है after a certain period of time. That is why a lot of teams have opted to bat first, even though Perth is a very quick pitch, right? अगर आप वो initial टाइम अगर आप निकाल सकते हो उस पिच में से, तो द पिच विल जनरली सेटल डाउन, व्हिच इज व्हाट हैपेंड. द सेकंड डे तक वो पिच सेटल डाउन हो गया था, which means that the batting became a lot more easier. It is not easy on that pitch at all. It is not that ki batting simple hai wahan pe. It is just that the batting scenario became a lot more easier. The deviation became a lot more less. And honestly, Australia were very, very flat, which is very, very surprising being it's a first test. And Australia are generally expected to dominate, in the first test. So they were very, very flat, which actually helped both Rahul and Jaiswal to play the way they want to play, right? Essentially, Australia just allowed the Indians to play the way they want to play. Uske wajah se you now see the score at like 170 for no loss or whatever it is. And from this position, there is only one team that can lose, which is Australia, until India does something so drastic tomorrow morning. There is no way that India can lose from here, which puts Australia in a lot more bind, right? Because 3 दिन है अभी भी, तो अगर if India can bat out properly कल का पूरा दिन and they sweat the Australians out all through tomorrow, and let's say they build a lead of say 400 or 450, you then get 2 full days. And agar aap, I don't know if you noticed it, towards the end of the day there was a ball from I think Mitchell Stark, which actually just went low. Jaiswal tried a drive and he actually missed it, and the ball actually went down and Carey actually picked it up on the ground, which means the pitch is starting to see uneven bounce, right? Abhi tak itna nahi hai. Unlike Indian pitches, it will not deteriorate like how it deteriorates, but over the next 2 days, right, third and fourth day mein wo pitch will become like it will have variable bounce. It will have like suddenly the ball might scoot up. Agar aapne notice kiya, there was that ball that Labuschagne bowled at the last over,
जो actually Rahul ko, right came right up to his head, right? Now, if Labuschagne can bowl that kind of a ball, you just think what would a Bumrah or a Harshit Rana or like a Siraj can do, right? So, if India can play all of tomorrow, or at least majority of tomorrow, and get a sizable lead, they are on 400 or 450, and then give Australia, say by the end of say kal समझ लो टी के बाद या 1 hour before the close of play, you give it to Australia, it's going to be a huge struggle for Australia to like do anything. This match is all for India to win, and it's now left to Bumrah and the team to ensure that they can actually win and go to, I think, the next test with a 1-0 lead, which will be very advantageous. राइट. अच्छा, ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो एक हमेशा इस एटीट्यूड के साथ में खेलती है कि वो एक फाइटिंग स्पिरिट के साथ, कभी हार नहीं मानने वाली टीम वाले एक अप्रोच के साथ में वो लोग खेलते हैं. पर आज का दिन जब खत्म होते होते आया तो वाकई में उनके शोल्डर्स बड़े डाउन लग रहे थे. शायद दिन भर की फील्डिंग और थकान, गर्मी, ये भी हम कह सकते हैं. पर एक जो फेस रीडिंग जो होती है, जो एक मोराल होता है अंदर से, वो थोड़ा सा उनका डाउन लग रहा था. तो क्या वाकई में वो एक मेंटली भी एक प्रेशर क्रिएट उनके ऊपर ऐसा लगता है आपको कि हुआ होगा, या फिर वो कल एक बड़े फ्रेश दिन, फ्रेश अप्रोच के साथ में आएंगे और दे विल ट्राई टू कम बैक हार्ड? They will definitely try to come back hard. That is 100%. Australia ka natural tendency is always never bother about what happened before. They start afresh. But it is the quality of the Indian batting that has actually deflated what Australia have done. So essentially, the performance that you saw from Australia today was a lot to do with how India batted, and also it adds to the fact that they actually thought they definitely lost out on a good scenario, right? Had Australia not had the kind of like 7 wickets lost for 70 runs, they would have had the best of time to bat, right? The time that India batted would have ideally what Australia would have batted if they had managed to survive yesterday, right? So again, it's bad batting from two sides. But more importantly, Australia batted more poorly than India did, which meant that they put themselves in a position where they unwantedly 40-50 run ka lead gawa diya, right? Now, and after that, India came out and played really, really well, right? The Australians would have hoped that they would have been able to make some inroads and put India under pressure, which didn't happen because both Jaiswal and Rahul played the waiting game. They were patient enough, and they learned very well from that first innings, right? When Jaiswal like played a loose shot to get himself out. And a lot of Indian players played very loose, and at least I could see that both Rahul and Jaiswal learned from what they did in the first innings and played very, very well. So it is the quality of the Indian batting that actually deflated the bowling, which eventually resulted in what you saw all through the day, right? Where Australia were way, way too flat for a normal Australian team. राइट. सो अनूप, इसके अंदर इंडियन टीम की तरफ से अगर हम लोग बात करें तो डेब्यूटेंट भी थे और ऐसे लोग भी थे जो फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे, एक्सपोजर था. तो ओवरऑल उनकी सिचुएशन, एडॉप्टेबिलिटी और कंडीशंस को अडॉप्ट करना, वो कितना इम्पोर्टेंट आपने समझा, देखा, और उसका रिजल्ट हमें जिस पोजीशन में आज इंडियन टीम है वो देखने को मिल रहा है. इसके लिए आपको काफी क्रेडिट बीसीसीआई को देना होगा, राइट? आप जितने भी बीसीसीआई को लाइक पीपल से कि बीसीसीआई ये है वो है, बट द क्रेडिट फॉर व्हाटएवर यू सी यंगस्टर्स कमिंग इन डूइंग सो वेल उनके फर्स्ट सीरीज में. आप हर्षित राणा ले लो, उन्होंने जैसे उनका फर्स्ट टेस्ट था, राइट? आप नीतीश कुमार रेड्डी ले लो, जैसे उनका फर्स्ट टेस्ट था. काफी लोग जो वो टीम में हैं, दे हैवंट प्लेड टू मच क्रिकेट, राइट, इन ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस, लेकिन द वे दे केम आउट एंड प्लेड, वो काफी क्रेडिट बीसीसीआई को जाता है टू एंश्योर दैट दे गेट द एक्सपोजर, बाय वो ए टूर हो या लाइक दे गो, लॉट ऑफ दीस प्लेयर्स गो एंड प्ले इन काउंटी क्रिकेट. तो you have to give a lot of credit to BCCI and the management to ensure that they have given pitches in India which allow them to grow this talent. They have created an extremely good bench strength, right? India went to South Africa and played a T20 series when majority of your players were playing a test cricket match, right? Matlab India ne bench strength bhi build kiya. There's a lot of credit that has to go to BCCI, former coaches like Ravi Shastri and Rahul Dravid, who actually built that bench strength, which means that India can now easily, like put up 3 squads and still be able to win, right? तो काफी क्रेडिट जाता है बीसीसीआई को. I mean, it's an aspect of BCCI that a lot of people forget, that they do a lot for the game of cricket. Forget all the politics, right? That
That is not what we are talking here. Right? We're talking about what BCCI has done in terms of getting this team ready. So what success you see for players is a lot to do with the process that has been built by Virat Kohli and Ravi Shastri, then followed by very well by Rahul Dravid and Rohit Sharma, and taken forward by Surya Kumar Yadav, and now Bumrah just taking that forward as well, right? So there has been a good succession line that has been built. अगर आपको कांस्टेंट सक्सेस चाहिए राहुल, तो यू नीड टू बिल्ड दैट काइंड ऑफ बेंच स्ट्रेंथ, राइट? देयर इज नो वे आपको सक्सेस मिलेगा कि आपने एक ही टीम बनाया। तो बेंच स्ट्रेंथ इंडिया ने बनाया है, दैट बेंच स्ट्रेंथ इज एंश्योरिंग कि आपके जो नए प्लेयर भी आएंगे वो इतने नए नहीं लगते हैं, क्योंकि दे हैव एक्चुअली हैड दैट एक्सपीरियंस ऑफ गोइंग एंड प्लेइंग इन दीस कंडीशंस एंड गेटिंग यूज्ड टू इट. So I think a lot of credit should be given to the BCCI, and obviously the players themselves have done that, but more credit has to go to the BCCI, and obviously playing in the IPL helps, right, Rahul? Agar aap dekhoge to IPL mein you have almost all the big stars ready to come and play, right? And that gives a lot of exposure, right? So for example, think of Harshit Rana, right? Unke saath mein KKR mein he had Mitchell Stark. You cannot get a better coach than Mitchell Stark if you want to bowl very well, right? What is Mitchell Stark's record? Nitish Kumar Reddy played with Pat Cummins, right? He played under the leadership of Pat Cummins. He would have learned so इसकी काफी क्रेडिट और श्रेय जाता है बीसीसीआई को. So we need to give credit to BCCI to ensure that they have built up that pool, and they have also built up competition like IPL, which gives exposure to these players to be able to play in that kind of scenario. So that is the actual reason why you see the success that comes year after year in cricket. Right. So day 3, what we can expect? Day 3 पे क्या हो सकता है? If all goes to plan, it should be India's day again, because again pitch would be a lot more easy to play on day 3. It will become difficult as it goes to day 4. So अगर India, it's all in India's court. जैसे मैंने आपको बताया, it is completely in India's ball game now. It is left to India to win this game. There is no way they can lose this game until they create complete harakiri tomorrow morning. They should look to play majority of tomorrow, build a sizable lead of at least 450 to 500 का target Australia को आप दोगे. Give them about 2 days to play, and you will easily win that game. There is no way Australia is going to hit 500 in 2 days time. You just have to get that batting sorted out. मतलब whoever comes in, right? It's not that this partnership will continue forever, right? So जो भी आएंगे इसके बाद, पडिक्कल ले लो आप या कोहली ले लो, they have to put their heads down and play for the team and ensure that India gets a lead of at least 450 to 500. And that is also big advantages. मैं आपको इसके लिए बोलता हूँ क्योंकि अगर आपने ऑस्ट्रेलिया को, if you keep them on the field for all tomorrow, think of it. Australia don't have a long line of bowling attack, right? 2021 में जब इंडिया ने जीता था, तो that was because by the time that 4th or 5th test came, Australia का वही 4 या 5 bowlers खेलते रहे. They don't generally change their bowling attack. It's the same 4 or 5 bowlers. There's only one two players who get changed, like Scott Boland may come in for a Melbourne test or something like that, जहाँ पे उनका काफी चलता है, तो उनका वही lineup होता है. So if you want to win against Australia, you need to tire these bowlers up, which is what Cheteshwar Pujara successfully did in 2021. And in 2018 also you had Cheteshwar Pujara and Ajinkya Rahane, who were able to successfully tire the bowlers. That means they have to revert to people like Labuschagne, Travis Head, or maybe get a Mitch Marsh to bowl a lot more overs than they have to bowl, and then you get that opportunity to easily milk runs against these players, because they don't have that bowling attack that will take them for a long time. And if you are able to sustain them for one more day, by the time you get to the second test, you're going to have a very tired Cummins, a very tired Mitch Stark, which is going to make it easier for India to further perform. So Australia ki taraf se, if they really want to do anything in this match, they have to make inroads first thing in the morning. If you come to Australia ki taraf se, if they really want to do any match of this, they need to get inroads in the morning. They have to get a lot of wickets. If they allow Rahul and Jaiswal to play for another 20-25 overs without losing another wicket, it's only going to be chasing the weather. Question is when India can get 400, 450 and declare. So I think the ball is in India's court. Let us see whether India really hammers the nail in the coffin or not, or is it going to be a time when Australia comes back? But it will be very interesting third day. Acha time hai. Right.
सो अनूप, अभी हमें, अगर मैं के आपसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कंसिडरिंग सिचुएशन इन हैंड, कि मान लीजिए ये टेस्ट इंडिया जीत जाता है, जो कि उसी ट्रैक पर है, तो ये टेस्ट इंडिया जीतने के बाद में जो आने वाले 4 टेस्ट हैं, उन 4 टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियन टीम का मोरल कैसा होगा? Definitely will be deflated because Perth जैसे जगह पे you don't expect Australia to lose, right? Because Australia पर्थ में बहुत कम बार हारती है, राइट? इट्स वेरी वेरी फ्यू टाइम्स. तो अगर ये मैच इंडिया जीतेगा तो इट एक्चुअली गिव्स देम अ वेरी गुड पोजीशन फॉर द नेक्स्ट 4 मैचेस. It probably will put Australia in a bigger back foot when they go to the next match. It will put them under a lot of pressure to actually go and win. And इतना याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन मीडिया, ऑस्ट्रेलियन एक्स क्रिकेटर्स एंड दे विल नॉट बी वेरी फॉरगिविंग. इट इज नॉट लाइक कि इंडिया जैसा कि लाइक आप विराट कोहली हो तो यार कोई कुछ बोलता नहीं है विराट कोहली को या रोहित शर्मा को. यहाँ पे ऐसा नहीं होता है. बी वो स्टीवन स्मिथ हो या पैट कमिंस हो, नो वंस बॉदर्ड अबाउट एनी रेपुटेशंस. यहाँ पे प्लेयर की वैल्यू उनकी परफॉर्मेंस पे होती है. एंड if Australia end up losing this game, it is going to be advantage India for the next test. It's also going to put a lot of pressure on their batting lineup, which has been very brittle. So the second innings is going to be important as well. जब भी Australia batting करेगा, and if they again lose out and they crumble, that means it gives an India significant advantage that they know that Australian batting is in a worse position, their own batting, which is advantageous when you go to the next test. I don't know if it's the pink ball test next one, but जो भी test होगा, it's going to be advantage for India if they win this test match. राइट. अब एक आखिरी क्वेश्चन, बड़ा ही एक ही क्वेश्चन मेरे माइंड में हमेशा रहता है, बोलिए कि इंडियन टीम हमेशा टेलेंडर्स को आउट करने में स्ट्रगल क्यों करती है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है ऑनेस्टली राहुल. एंड दिस हैज बीन, ये वाला प्रॉब्लम इंडिया के साथ काफी टाइम से रहा है और मैंने इसको काफी एनालाइज किया है. बिकॉज आई हैव ऑलवेज थॉट कि ऐसा क्यों होता है कि इंडिया इज अनेबल टू गेट योर 8 9 10 11 आउट व्हेन यू कैन गेट 1 to 7. उसका दो रीजन है. एक तो जो टेल एंडर होता है, राइट, उनके पास टेक्निक नहीं होता है, राइट. आप जब टॉप ऑर्डर बैट्समैन को बॉलिंग करते हो तो आपको पता है कि दे आर टॉप ऑर्डर प्लेयर्स, देन दे आर गुड प्लेयर्स. तो आपके जो बॉलर्स होते हैं, दे पुट अ लॉट मोर एफर्ट in trying to get the batsman out, which means they bowl lot more good balls, right? Which make get the batsman out. जब टेल अंडर आता है तो क्या दूसरा दो चीज क्या होता है कि वन, जो बॉलर होता है, आई हैव सीन देम like think like we should be able to get them out, and they start to like try too hard to get people out, right? A normal bowler will like make good amount of effort to get a top order batsman out, but when the tail ender comes, they try overtly too hard, trying different kinds of balls, bouncer or hawker, wide ball. They try a lot of things to a tail ender. That is one of the first reasons. Second reason is, in the past, like how do you get a tail ender out, right? You're not going to get them out by like bowling length balls, because एक जो प्रॉपर बैट्समैन होता है उसके पास टेक्निक होता है टू प्ले अ लेंथ बॉल, राइट. अ टेलेंडर इज मोर लाइक अ गाय हु कम्स एंड होप्स दैट लाइक वो कुछ तो करेगा. ही विल ईदर स्विंग हिज बैट, तो काफी एजेस ऊपर जाएंगे, राइट. दोस काइंड ऑफ सिनेरियो. तो पुराने टाइम में जब व्हेन पीपल यूज्ड टू गेट टेलेंडर्स आउट, they had a very good bouncer. They had like those balls that make a tailender very uncomfortable, right? If I bowl a ball to a tailender right almost at his chest height or his head height, it's very difficult for them to play because उनके पास वो टेक्निक नहीं है. आजकल के फास्ट बॉलर्स में वो कांस्टेंट पेस टू बी एबल टू बोल दोस काइंड ऑफ बाउंसर्स बहुत कम है. दिस इज योर सेकंड रीजन why most teams struggle and India also struggles. And the other thing I've seen is that जैसे ही कोई टेलेंडर आता है और समझ ली उनके साथ कोई ऐसा प्लेयर है, लेट्स से यू हैड अ बैट्समैन विद अ टेलेंडर, दे गो इनटू दिस थिंग कि वो बैट्समैन को आप एक सिंगल दो ताकि टेलेंडर को आप स्ट्राइक पे लेके आ सकते हो. नाउ आई हैव ऑलवेज फाउंड दैट अ वेरी स्ट्रेंज टेक्निक. इट इज वेरी वेरी सिमिलर टू आप नाइट वॉचमैन को भेज देते हो. आज तक मेरे को ये नहीं समझा है कि व्हाई डू यू सेंड अ नाइट वॉचमैन. अगर आपके नंबर 3 प्लेयर, if Virat Kohli cannot play Pat Cummins and Mitchell Stark, how do you expect Jasprit Bumrah to play 1 over of Mitchell Stark and Pat Cummins, right? So I have never understood the concept of night watchman. It is very very similar. जब टेलेंडर आता है खेलने के लिए, why would you go ahead and like give one run to the other batsman? तो आप क्या करते हो? You're actually giving the other batsman the opportunity. One of the best players who played with the tail was Stephen Waugh.
स्टीवन वॉ का जो तरीका था वो बहुत ही डिफरेंट था. स्टीवन वॉ यूज्ड टू ऑलवेज टेक अ सिंगल व्हेन देयर वाज अ टेल एंडर. बहुत लोगों को लगता है कि यार ये पागल है क्या, व्हाट इज ही डूइंग यार, अभी टेल एंडर को नहीं आता है. ही ऑलवेज सेल कि यार जब रन मिलता है तो आई शुड टेक दैट रन एंड अलाउ द टेल एंडर. अगर वो आउट हो गया तो आउट हो गया, but at least you are getting one run, right? So unka jo tarika tha, which also put a lot of belief on the tail ender to be able to do it. That's why you had players like Jason Gillespie who got hundreds and all as a tail ender, right? So these are the three reasons. Primarily, there is no more that kind of chin music bowling that people are capable of. Most times bowlers tend to think that it's easier to get a tail ender out, and if they don't get them out, they're trying to do too many things, like try things which eventually means that वो tail ender एक आध बार तो swash कर ही देता है. So these are some of the reasons why teams struggle to get tail enders. And the last reason, most importantly, nowadays tail enders are no more tail enders because they do know how to bat. uh, they do learn to bat, they do batting sessions. So Right. they're not essentially tail enders, they are more like finishing batsmen. So they are able to like survive themselves. So you need to have a sustained plan when you start to see tailenders. How do you get these tailenders out? Unki weak points kya hai? You need to map all that. I don't think कि इतना data tailenders को map करने में जाता है जितना आप main batsman को map करने जाते हो. तो maybe the lesson for every coach is that spend time on how to get tailenders out and identify the bowlers who can do it, right, Rahul? You have to also identify कि वो कौन सा bowler है जो tailender को out करने में ज्यादा कामयाब होगा. और आप उस बॉलर को अपॉर्चुनिटी दो ताकि वो टेल एंडर को निकाल सके. इफ दैट इज नॉट डन, यू आर ऑलवेज गोइंग टू हैव दिस स्ट्रगल. एंड इट्स नॉट ओनली विद इंडिया. 2021 में इंडिया के काफी टेल एंडर ने लाइक वी वन अ लॉट ऑफ टेस्ट, राइट? आई मीन हनुमा विहारी विद अश्विन एक्चुअली मैनेज्ड टू प्ले ऑलमोस्ट वन होल डे, राइट, टू सेव अ टेस्ट मैच, राइट? सो जसप्रीत बुमराह ने भी इंग्लैंड में जाकर बैटिंग करी थी और वो टेस्ट मैच हम लोग जीते थे. That's what I'm saying. Like they are no more tail enders. They are decent batsmen, I would say, not tail enders. So that probably like you need a plan for them just as much as you plan to get Mike Steven Smith out. एब्सोल्युटली. सो बड़ा ही अच्छा और प्रिसाइज आंसर दिया अनूप आपने. चलिए आज के डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं और आई एम श्योर कल का दिन जब हम इस डे एंड रिव्यू पे बात कर रहे होंगे, इंडिया जो है वो ऐसी कंफर्टेबल पोजीशन में रहेगा जहां से वो केवल मैच जीतना उसके लिए एक मैटर ऑफ द टाइम रहेगा. अनूप आज के डिस्कशन. जी जी. हाँ, important thing, Rahul. कल 3 o'clock is when the IPL auction starts. Right. So that's exactly 10 minutes after the match completes. So they have kept it smartly to ensure that day end हो जाएगा और ऋषभ पंत आएंगे तो एकदम दिल मन साफ करके बैठेंगे, उनको 21 या 22 करोड़ जो भी मिलेगा. So it is, so I think कल का जो अपना सेशन होगा, we might have to just plan it out a bit because we need to focus on IPL, right? Because that is probably the world's biggest auction. So yeah, so maybe we'll have to plan the session out for tomorrow, but I think maybe we can have the session just after maybe the tea or something like that, right? So we can plan it out, but I think it will be a good day for test cricket. And more importantly, right, I think I can't wait for the IPL auction, to be honest. That is the one I'm much more eagerly looking for because it's going to be pretty fun. इनफैक्ट आईपीएल ऑक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा पूरे 2 दिन के बाद, उसके बाद हम एक डेडिकेटेड सेशन आईपीएल ऑक्शन और जो टीम का जो फॉर्मेशन है उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे. So maybe we can take 2 minutes of this. Who do you think would be the top earner in the IPL? This is a pre-prediction. Chalo, let's just give this a shot. Who do you think we'll spend maybe 5-10 minutes talking on the IPL? Okay, because it's तो आपको क्या लगता है कि कौन सा प्लेयर होगा जो टॉप मनी कमाएगा फ्रॉम इंडिया पर्सपेक्टिव? फॉरगेट द फॉरेन प्लेयर्स, इंडियन प्लेयर की तरफ से आपको कौन लगता है कि हु विल गेट द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मनी? राइट. वेल, इंडियन प्लेयर्स में मुझे 3 प्लेयर लगते हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा बिड होने के चांसेस लगते हैं, क्योंकि वो तीनों प्लेयर जो है वो कैप्टन कैंडिडेट हैं. अगर वो किसी टीम में जाते हैं तो कैप्टन बन सकते हैं, और क्योंकि आई एम श्योर 4 या 5 टीमें ऐसी हैं जो कैप्टन भी देख रही है अपने आप को. एक श्रेयस अय्यर है जो कैप्टनसी भी कर चुके हैं और उनके ऊपर बिड भी अच्छी लग सकती है. फिर केएल राहुल ऑफ कोर्स, और तीसरा ऋषभ पंत. ये 3 प्लेयर मुझे ऐसे लगते हैं जिनके ऊपर जो है वो टीमें ज़्यादा बिड करने के लिए जाएंगी, और अगर ये प्लेयर किसी भी टीम में जाते हैं तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर रहेंगे उस टीम के कैप्टन बनने के लिए.
सो करेक्ट। ये एक मुझे क्विक एनालिसिस, एक टॉप लेवल 30,000 फीट के ऊपर का एक हम लोग क्विक एनालिसिस करें तो ये मुझे लगता है। दो और प्लेयर मैं आपको बताता हूँ, अदर देन दीज थ्री दैट यू पॉइंटेड आउट, राइट? इन द ऑप्शन आई थिंक अर्शदीप सिंह इज गोइंग टू बी अ बिग ड्रॉ, because of the fact that, you know, I'm sure Punjab want to buy him back, right? So अगर उनको वापस लेना है तो I think Arshdeep Singh is going to be a big draw. Another person जो काफी लोग नहीं बात कर रहे हैं is Natarajan. He's also not been retained as far as I know by Sunrisers Hyderabad, right? अगर आप Right. स्मार्ट ऑक्शन में जाते हो, अगर आप स्मार्ट टीम हो, तो यू वुड वांट अ गाय लाइक नटराजन हु कैन बोल यॉर्कर्स एट विल, एंड उनका परफॉर्मेंस लास्ट आईपीएल में बहुत ही बेहतर था, and he's been a consistent performer, right? So Natarajan is going to be one strong pick if you look at it from that perspective, other than obviously Rishabh Pant. आपने जो तीन नाम बोला उसके अलावा ये दो नाम. And another player I think who's going to be a big draw if he's going to be Venkatesh Iyer. He brings to you that all-rounder capability. It's sad that because IPL में अभी आपके पास impact player का rule है, you know, Venkatesh has not had a chance to bat that much, or sorry, bowl that much. But Venkatesh Iyer is going to be a big draw अगर आप इंडिया की तरफ से देखोगे. So I think these players are going to be big draw, and you don't forget Shami also is in the auction. So if I am thinking of building my bowling attack, if I am Punjab, right, which has got 110 crores available to bid, so I would think of, you know, like picking either one of Rishabh Pant or Shreyas Iyer, right? Because you would need somebody like them, and they can throw money, right? They have so much money that others don't have. I mean, I would go all out for Shami. So if I'm sitting in that auction table, and I would love to sit in that auction table, there's nothing better than sitting at an IPL auction table. It will be like I would go all out to get a bowler like Shami, right? Because you cannot. अगर मेरे bowling attack में अगर मुझे तीन लोग लगेंगे तो मैं बोलूँगा कि I will all, if I have to pick three Indian bowlers in any, because Bumrah is no more available, right? So if I have to pick three Indian bowlers from the auction, तो मेरा choice होगा always Shami, Arshdeep Singh and Natarajan, right? Because they give you those skills which are very, very difficult to find in a kind of a bowling attack, right? They will give you really good bowling. अगर आप देखोगे तो these three people, and another person who I think will lot of talk will happen will be also Ravichandran Ashwin, because he's going to be in the auction, and, you know, like there's a good chance that, you know, teams that are looking for a good spinner and a good strategist kind of scenario will want to go for a guy like Ashwin. So that is another good aspect. Foreign players में आपको कौन लगता है, राहुल? Who will be the top player in the bid? फॉरेन प्लेयर्स में ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने इतना उस लिस्ट को एनालाइज नहीं किया है कि अभी कौन से फॉरेन प्लेयर्स अवेलेबल हैं, बट यस जब आईपीएल के ऊपर हम लोग बात करेंगे तो मैं जरूर उसको करूंगा, स्टडी करूंगा, बट अभी फिलहाल एट द मोमेंट मैंने उसको नहीं एनालाइज किया। दो तीन प्लेयर बताता हूँ which will be helpful as well. I think अगर आप फॉरेन प्लेयर्स पे जाओगे तो बॉलर्स की तरफ से you are going to have Kagiso Rabada, जो काफी अच्छे ऑप्शन है for you to look out for, right? So Kagiso Rabada I think will go for a lot of bids. If you are a very smart kind of auction guy, I mean team, you want to get a good bowler, Kagiso Rabada is going to be a big draw. जिमी एंडरसन के बारे में आप क्या सोचते हैं? यार उनकी तरफ कोई टीम जा सकती है या फिर he will go unsold? I think he will go unsold. But if I, as I told you, if I was sitting in the auction table, I would definitely pick Jimmy Anderson because of the fact that he gets the experience to guide young bowlers. So, you know, आप एक प्लेयर को इसके लिए नहीं पिक करते हो क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है. आप एंडरसन जैसे प्लेयर को इसके लिए पिक करोगे क्योंकि वो अच्छा खिलाड़ी भी है और वो आपको एक अच्छा बॉलिंग कोच का रोल भी देगा. So if you have the money, you know, guy like Jimmy Anderson would be a great pick. Foreign players में मुझे लगता है bowlers में Kagiso Rabada would be a big draw. Sam Curran is in the auction, so Sam Curran is going to be a big draw as well. Batting की तरफ से आप देखोगे तो Maxwell is going to be another big draw. Then there is Will Jacks who is available in the auction, who is going to be a big draw as well, right? Right. एक सेकंड, मैं मैक्सवेल की बात करूंगा यहाँ पर. मैक्सवेल जो है ना वो जितना अच्छा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते हैं, उनका आईपीएल का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो इट इज पैथेटिक, राइट? तो वो मैक्सवेल सिर्फ अपनी गुडविल की वजह से अच्छा प्राइस हमेशा ले जाते हैं और टीमें अट्रैक्ट हो जाती है, बट उनका अब तक का परफॉर्मेंस जो है वो उनके कैलिबर को मतलब वो मैच नहीं करता है. यार आप इतना याद रखना,
it's like this, Rahul. Maxwell is like, I've always said, Maxwell is like Virendra Sehwag. Okay, you cannot expect. He on his day he will destroy you. Okay, and not always is going to be his day. Maxwell will still be a big draw in the auction. I'll tell you another player who's going to be a big draw. It's going to be Jake Fraser McGurk from Australia, who is going to be a very, very big draw. He had an amazing IPL last year. तो वो एक बहुत बड़े chances हैं. So I think the IPL auction is going to be very, very interesting. So, like, it's going to be good fun to watch it tomorrow. So, like, I'm going to spend my time watching the auction. यार कल दो चीजें हैं कल देखने के लिए. Absolutely. Awesome. But anyway, we'll have the chat. All good. Thanks a lot, Rahul. Catch up with you. Absolutely. Thank you.